Hello everyone, how are you? Well guys, this is day second of our English speaking classes. As like this is day second of our idiom and phrases as well. In this video I'm going to teach you more idiom and phrases so that you can become fluent in English as soon as possible. This is the intention of yours and this is the intention of mine as well, so both we are together going to rock, bro. Anyway, let's start, but before that, just a reminder: subscribe, share, share this video, like this video, and welcome you all to my channel. Let's talk about it. First idiom and phrase I have taken for you is बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश जैसे यार छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यार, दो कुड़ियाँ जैसे यार एक बंदी को मान लो फीवर हो गया। अब तुम क्या बोली, पता है मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, फिर मैं सोचा चलो शॉपिंग कर लेती हूँ। फिर मैं बिग बाज़ार गई थी, मैं परचेज़ कर ली थी। फिर क्या हुआ यार, बारिश होने लगी। मैं अब सोच रहा मैं जाऊँ ना जाऊँ, बारिश रुक ही नहीं रही थी। फिर मैं किसी से बच के आई, लेकिन फिर मैं गिली हो गई, मैं बीमार हो गई। अब भी यार ऐसे भी डायरेक्टली बोल सकते थे ना, थोड़ा सा यार हो गया था कल, थोड़ा सा हम बारिश में भीगे थे और हो गया था, फीवर हो गया। अब इतना जो कहानी बनाया, दिस इज़ व्हाट बीट अबाउट द बुश। इतना चौड़ा कहानी, पॉइंट पे नहीं आ रहा हो, फालतू में इधर सुधर बातें कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट बीट अबाउट द बुश, राइट? You should come straight to the point and not beat about the bush. The second word, the second idiom and phrase I have taken for you is behave. Behave is something what we all know. I don't think so I need to explain this, so I'm totally jump into the example of it, of behave, right? Behave yourself, man. Behave your व्यवहार करना is something what very easy. Sometimes I also take easy so that this is a reminder for you, so that whenever like any person just forget it, oh come on bro, you can't forget this kind of a small and easy ones as well. Anyway, what is the example of it? The teacher said to the boy, behave yourself, don't be silly, right? The third idiom and phrase I have taken for you is blew. Blew means फालतू में पैसे खर्च करना। तो मैं बहुत बार क्या हो जाता है कि यार वी डोंट वांट दैट थिंग, बट लेकिन यार रैंडमली हम परचेज करते हो, ऐसे में हम बहुत सारे पैसे अपने फालतू में वेस्ट कर देते हैं जिसका हमें कोई यूज़ भी नहीं होता है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ब्लू, BLEW, राइट? सो दिस इज़ ब्लू, सी को ब्लू कहते हैं फालतू में पैसे खर्च करना। यार ज़्यादातर ये चीज़ें कुड़ियाँ करती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डोंट अर्न मनी, राइट? सो उन्हें ये नहीं यार, हाँ खत्म हो गया, एक स्माइल दे दें 2 रुपये का, तुम व्हाट द हेल, स्माइल इज़ फाइन बेब, बट यार पैसे भी तो लग जाए ना फालतू में, इसका कोई यूज़ भी नहीं हो रहा है। बेब इट्स नॉट ब्रो, बेब, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? एनीवे, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इट. He blew all the money his father had given him. अब ये नालायक, कभी कभी बंदे भी नालायक तो होते हैं, बंदे तो ज़्यादातर नालायक ही होते हैं ब्रो. Anyway, let's talk on the next idiom and phrase, that is blow hot and cold. यार blow hot हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा. दिस इज़ व्हाट मीन्स जल्दी जल्दी बदल दो, बहुत फ्रिक्वेंटली बदल दो, मतलब यू आर नॉट स्टेबल विथ योर वर्ड्स, यू आर फ्लक्चुएटिंग अ लॉट, राइट? सो दिस इज़ व्हाट ब्लो हॉट एंड कोल्ड. आई मीन कभी तुम कह रहे हो ठीक है मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ, कभी तुम कह रहे हो कि मैं तेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कभी तुम ये कह दो, कभी वो कह दो. यू आर नॉट स्टैंड बाई ऑन योर वर्ड्स इज़ व्हाट ब्लो हॉट एंड कोल्ड. सो दिस इज़ व्हाट जल्दी जल्दी बदलना, राइट? So what is the example of it? You can't rely on her, she blows hot and cold, right? Next one is blow one's own trumpet, means अपनी ही प्रशंसा, अपनी मुँह मियाँ मिठू तो पता ही होगा ना यार, तो अपनी अरे मैं ये हूँ वो हूँ
एक्चुअली तो मुझ हो नहीं है, जस्ट बोस्टिंग ऑफ, बोस्टिंग ऑफ भी सेम मतलब होता है कि अपनी ही बातें करो, अपनी अपनी मतलब कि मैं हम ही हमें बाकी सबको मैं काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट होता है. दिस इज़ व्हाट ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट. और ये एग्ज़ाम्स में भी बहुत आता है. एसएससी इसको बहुत ज़्यादा पूछता है. आईएएस वगैरह में तो नहीं पूछता, लेकिन एज फार एज स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली एसएसई इज़ कंसर्न, दिस इज़ समथिंग व्हाट अ वेरी फेमस एंड वेरी favorable idiom of SSC, right? He always keeps on blowing his own trumpet, right? Next one is blow out. Blow out means what? बुझाना. इसको ऐसे quench मतलब ही बुझाना होता है, लेकिन blow out यहाँ पे it's like blow out of my thirst. किसी को प्यास लगा, तुम एक गिलास वाटर दे रहे हो, तो तुम क्या करोगे? You are blowing her or his thirst, right? Blow out means फायर को भी ब्लो आउट कर सकते हो. तो एज पर द सिचुएशन यू विल यूज दिस idiom and phrase, that is blow out, right? Next, what is the example? The light of the candle was blown out by the wind. Last but not the least is make one's blood boil. खून ही खोल रहा है यार. रिलैक्स ब्रो, इतना टेंशन मत लो. बीपी हाई करने की ज़रूरत नहीं है यार. यू कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय talking with that person. If you're not finding the solution of that thing, so what is the matter to make your blood boil? Yeah, so make one's blood boil is खून खोलना, and this is not a good thing as far as any person health is concerned. I don't like to make my blood boil. I'm very cool guy, so I love to be cool instead of why to relax. I mean, life is not to make your blood boil. Life is to enjoy, resolve things. If problem is coming, instead of just what to do, how to do, so relax, just think how you can take the result of it, how you can solve this problem, right? Instead of just making what to do and just become angry or unnecessary, just creating chaos, right? This is not right? My blood boils when I think of his rude behavior. रोड पे चलते हो यार, कभी तुम्हें कोई फालतू में कुछ भी बोल के चला गया यार, उसके पास फालतू टाइम है, तुम अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो? आई मीन इट्स लाइक दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल यार. यू कांट एक्सपेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन इज़ गोइंग टू बिहेव द वे you want to be, right? Not every person is going to behave, or not every person is going to behave the way it should be. Like the world is so big, so many persons, 800 crore people of this this earth ki population is huge, so yeah, don't expect every person is going to behave that you are expecting, and it should be, right? So this is me signing off from this video. Have a great time here. Subscribe, share this video, like this video, and of course comment down below if you are finding any difficulty in any of the idiom phrases to understand. Let me know. So comment down below, and apart from that, subscribe, let this video spread, share it, so that more and more students are going to benefit it from this, right? And all you can do is to like it, so that care is a very good appreciation for me. And subscribe is something what if you want to associate yourself with me, right? So this is me signing off from this video. Have a great day.